Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's session, we are going to start chapter number 15. Okay, and the name of this chapter is Wheel Invention. Okay, in this chapter, we are going to see, my dear students, transportation. Okay, means what is the meaning of transportation? Transportation of early man. Okay, so early man's what kind of transport system they use? Invention of wheel, how early man invented wheel, and we are also going to see how early man used wheels and use of wheels in our today's modern world. So all this thing we are going to discuss in this chapter. Okay, so come with me and let's explore the chapter. One of the greatest invention in history has been the wheel, whether used for vehicles or to make potteries. See, in humankind, okay, means in the entire history of humans till date, one of the greatest invention was invention of wheel. Okay, so the invention of wheel, and wheel may be and wheel is used for two purposes, basically for vehicles or making pottery in ancient time. Okay, even still today. Okay, the wheel has been around for as long as any of us alive today can remember. ठीक है, हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक व्हील्स हमारे साथ रहेंगे. ठीक है, कैसे हम कार का यूज करते हैं, हम टू व्हीलर का यूज करते हैं, फोर व्हीलर, हम कुछ भी यूज करते हैं, सब में व्हील्स होते हैं. ठीक है, it performs many tasks in different ways. Wheels perform many tasks in different ways. In the modern times, we use many vehicles for transportation. Okay, so in today's modern generation, modern world, we use wheels for transport. These are, and in transportation system, wheels are used in trains, buses, cars, aeroplanes, etc. So all this transportation system have the wheels. These vehicles are fast and comfortable. So all these vehicles are very fast, okay, and they are much more comfortable. All these vehicles run on wheel. So train, buses, car, aeroplanes, they all run on wheels. But the wheel that we see today were not like this. अच्छा, जो wheels आज हम देख रहे हैं एकदम पूरा का पूरा एकदम टेक्निकली एडवांस्ड होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के डिजाइन होते हैं. क्या ये wheels ऐसे ही हमेशा से थे? नहीं, wheels ऐसे नहीं थे. पहले कुछ और थे, आज कुछ और हैं वो. ठीक है. Long ago, early man used to walk further and further from their home in search of food. Early mans क्या करते थे? Early mans पहले पैदल चलते थे. ठीक है, अपने खाने की खोज में और रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है, their life was very difficult. So due to continuous traveling from one place to another place in search of food and shelter, their life become very difficult. Okay, they carried heavy loads hanging on the stick on their shoulders. ठीक है, पहले तो व्हील्स थे नहीं, पहले तो कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था, तो वो क्या करते थे, वो जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे तो वो अपने पीठ पे बहुत हैवी सामान लेके चलते थे. और वो सामान कौन सा होता था? उन्हीं का अपना सामान होता था. ठीक है. Later they learned to use some animals to pull and carry heavy things. So slowly क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने ये सीखा कि वो एनिमल्स का यूज कर सकते हैं अपने हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए. ठीक है, these animals were used for transportation. So for the very first time animals, okay, for the very first time animals were used for transportation by early man. Okay, so these were tamed and trained for the purpose of transportation. Now early man started giving training those animals for their transportation purpose. These animals were, अच्छा, वो कौन कौन से एनिमल्स थे जिनको अर्ली मैन ने ट्रेनिंग दिया था अपने हैवी लोड्स को कैरी करने के लिए? दे आर ऑक्सन, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल्स एक्सेट्रा. तो ये सारे वो एनिमल्स होते थे जो अर्ली मैन्स के लोड को कैरी करने का काम कर सकते थे. हियर यू कैन सी early mans used to carry their own loads. Okay, here in this picture. Okay, and after learning that they can use animals to carry their loads, they provide training to those animals. Okay, here you can see in this picture. Okay, animal is carrying the load of early man. Okay, now
These animals helped people to travel further and faster. जब इन लोगों ने एनिमल्स का यूज करना सीख लिया तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनके लिए क्या हुआ, अर्ली मैंस के लिए वो इजी हो गया थोड़ा सा और फास्ट भी हुआ. पीपल रोड दिस एनिमल्स टू गेट टू प्लेस फास्टर. ठीक है. अच्छा, अब आप ये बताओ, इन दो पिक्चर्स में अर्ली मैंस ये अपना लोड खुद खींचते थे, तो इससे क्या होता था, इनको टाइम भी ज्यादा लगता था और इनकी मेहनत भी ज्यादा लगती थी. वहीं यहाँ पे क्या हुआ, एनिमल्स जब खींचने लगे इसको, इनके लोड्स को, तो यहाँ पे टाइम भी कम लगा और इनकी मेहनत भी कम लगी. ठीक है. अर्ली मैन बिगेन टू यूज दिस एनिमल्स टू पुल स्लेजेस. ठीक है. और ये स्लेजेस के तौर पे यूज करने लगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लेजेस? Here you can see in this picture, okay, sledges का मतलब ये है. ठीक है, जो खींच रहा है ये ठीक है, ये जो देख रहे हो ना, ये जो है, ठीक है, तो इसी को हम sledges बोलते हैं. ठीक है. But it was difficult to pull heavy loads for a long distance. But you know what, my dear student, there was a beneficial terms for early men, that they can put their all heavy loads on animals. But animals are also living being. Okay, so it is very very hard. Okay, so it is very difficult job for the animals to carry so much of load for a longer duration. Okay. Some clever men saw rolling down a hill, they got an idea. तो उन्हीं अर्ली मैंस में से कुछ अर्ली मैंस ने देखा होगा कि एक क्या है, रोलिंग डाउन अ हिल. ठीक है. उन्होंने ये देखा कि एक लकड़ी या कुछ ऐसा देखा होगा जो पहाड़ों से गिरते हुए चली आ रही है. यहीं से उन्हें एक आइडिया आया कि जब वो चीज इस तरह के रोल करते हुए गिरते हुए चली आ रही है, तो हम लोग भी तो कुछ ऐसा बनाए जो रोल करते हुए चले एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है. सो यहीं से उनको व्हील बनाने का आइडिया आया. द फर्स्ट व्हील वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय कटिंग अ लॉग ऑफ वुड. ओके, सो ऐसा माना जाता है कि अर्ली ह्यूमन बींग्स ने जो व्हील बनाया था, तो वो कहां से बनाया था, उन्होंने लकड़ी को काट के वो व्हील बनाया था. ठीक है. अर्ली मैन पुट राउंड लॉग्स इन स्लेजेस. ठीक है. अच्छा, ये देखो, पहला इन अर्ली मैन ने देखा कि अच्छा ये इस तरीके से पहाड़ों से ये लॉग क्या कर रहा है, उड़कर नीचे सरकते हुए आ रहा है. यहीं से इनको आइडिया आया दैट बाय यूजिंग दिस आइडिया वी कैन आल्सो इन्वेंट व्हील्स. ठीक है. तो अब ये दूसरे पिक्चर में देखो, इन्होंने क्या किया, इन लॉक्स को कट करना शुरू किया एक राउंड शेप में. ठीक है. एक राउंड शेप में इन लॉक्स को इन्होंने कट करना शुरू किया. ठीक है. और ये कटे हुए लॉक्स को इन्होंने क्या किया, अपने गाड़ियों में फिट करना शुरू किया. ये देखो, पहले यहाँ पे नहीं था. ठीक है. एनिमल्स यूज टू कैरी देयर लोड्स. ओके, फिर उन्होंने क्या किया, इस जगह पे धीरे धीरे इन्होंने ये पहिए लगाना शुरू किया. ठीक है. They found it was easy to carry heavy loads on sledges using this logs. ठीक है. अब जब इन्होंने ये पहिया यहाँ पे लगा दिया, so after putting this wheel, early man got an idea that we can carry our heavy loads by using this sledges very quickly. Okay. ठीक है. While the passing of time, man modified the cutting of logs and the wheel was invented. तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, व्हील्स में भी मॉडिफिकेशंस होते रहे. पहले कुछ और व्हील्स थे, फिर कुछ और बने, फिर कुछ और बने, और आज हमारे सामने मॉडर्न व्हील्स है. ठीक है. आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड, मैन बिगन टू बिल्ड कार्ट्स. ठीक है. जब व्हील का इन्वेंशन हो गया तो अर्ली मैन्स ने कार्ट्स बनाना शुरू किया, लाइक योर बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट. ठीक है. These carts were pulled by oxen and horses. और ये कार्ट्स किससे खींचे जाते थे, ऑक्सन या हॉर्सेस से. ठीक है. They built carriages and stage coaches to carry passengers from one town to another. फिर इन्होंने क्या किया, जब कार्ट्स इन्होंने बनाया तो इसके थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू करते हैं बहुत ही इजी और फास्ट वे में. Today wheels are used in making clay pots. In today world, wheels are generally used for making clay pots. Okay, it is known on the potter's wheel, and right now the wheels which are which is used for making clay pots are known as your potter's wheel. Okay. Now the bicycle, motorbike, train, scooter all move on wheels. Okay. Now all the vehicles have a wheel, like your bicycle have a two wheel, motorbike, your train, scooter, aeroplane, all these vehicles move on wheel. We and our goods move very fast now. अच्छा, इन सब की वजह से क्या होता है, अगर हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं या ट्रेन से अपना कोई सामान भेजते हैं या फ्लाइट से भेजते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में पहुंच जाता है. ठीक है.
The birth of wheel made the transportation very easy today. Okay, so the birth of wheel has made really the transportation very easy. Okay, so here you can see this type of wheels are used in our modern world. Okay, so this is all about in this chapter. So come with me, let's have a quick revision of this chapter. So what are the things which we learn in this chapter? All vehicles run on wheels. The first wheel would have been prepared by cutting a log of wood. So पहला wheel कैसे बना था? ये wood को काट के बना था, ठीक है? It helps in pulling load from one place to another place. Now the bicycle, motorbike, train, scooter, all those vehicles have a wheel. Okay, so this is all about in this chapter, my dear student. I hope you all got a very good understanding of this chapter. Okay, now revise this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new video. Till then, take very good care of yourself. Bye.